Pushing for declaring Bhagavad Gita as a national scripture, External Affairs Minister Sushma Swaraj said the holy text has answers to everybody's problems. बहुत बार लोग ये सोचते हैं गीता, रामायण, महाभारत, भागवत ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीजें हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे में गीता खोलते हैं तो कहते हैं काश हमने ये जिंदगी के युवावस्था में पढ़ी होती। तो जिन चीजों का सामना हमने अपने तरीके से किया और आज यहाँ पहुंचे, उसकी बजाय अगर हम गीता के रास्ते चलकर अपनी जिंदगी जिए हुए होते तो हमें कष्ट नहीं होता और आज हम कहीं के कहीं होते। The Union Minister was speaking at the Gita Prerna Mahotsav to celebrate 5,151 years of the religious book at Delhi's Red Fort. Though a formal announcement remains in making Bhagavad Gita a national scripture, Swaraj said Prime Minister Narendra Modi has already given the holy text the honor of a national scripture when he handed over the Gita to American President Barack Obama. गीता वो है जो आज पढ़नी है, जो आपको जीवन के जीने का रास्ता देगी, आपका माध्यम बनेगी। और इसीलिए मैंने संसद में खड़े होकर कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अभी उसकी औपचारिक घोषणा तो सरकार आने के बाद नहीं हुई, लेकिन स्वामी जी महाराज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के हाथ में प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से श्रीमद् भगवद गीता भेज करके इसको राष्ट्रीय ग्रंथ जैसा सम्मान तो पहले ही दे दिया। The Prime Minister had also gifted a copy of the Gita to Japanese Emperor during his visit to Japan in September. Swaraj's comments have evoked sharp responses from the opposition. Congress leader Manish Tiwari called it a symbolism. He said, "The essence of the Gita lies in its substance and not in its symbolism. So if anybody has seriously read and internalized the teachings of the Gita, they would not make such a frivolous statement." West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said, "Our constitution says India is a secular country. The constitution is the holy book in a democracy. We respect all holy books equally. They are all our pride. Quran, Puran, Ved, Vedanta, Bible, Tripatak, Zend Avesta, Guru Granth Sahib, Gita. We respect all." Vishwa Hindu Parishad President Ashok Singhal, who was also present at the event, said Prime Minister should immediately declare Bhagavad Gita as a national scripture. Bureau Report, DD News.